Welcome to the panel discussion today on reservation for economically weaker sections. We're asking the important question today whether the 103rd Amendment to the Constitution, which was affirmed by the Supreme Court of India, is this undermining the foundational principle of the Indian Constitution, as two minor judges giving the minority what it said, or is this provision for EWS reservation actually reinforcing the foundational principle of Indian Constitution, which the majority three-judge bench said? It's a matter of debate, and that's a debate we will start on the process. In this discussion, we have three eminent academics: Dr. D.K. Giri, who is an author, a discussant in several platforms. He is the General Secretary of Association for Democratic Socialism in India. We have Dr. Ajit Shah, is a professor of history in Delhi University, has been writing and speaking on larger issues, consistently been a public intellectual and intervening in the major issues in the country. We've also Dr. S.K. Jain, who is a professor of political science in Delhi University and has been one of the pioneers in discussing about major political developments in the country. Unfortunately, Dr. Jain's audio is not working. He will join a little later, possibly if it sets right. But we will begin the panel discussion with the rest two panelists. In the format, we will begin with a 1-minute statement from our speakers, and then we will carry forward the discussion for the next 40 minutes. First, let's start with Dr. D.K. Giri. What is your basic proposition on the reservation for the economically weaker section? Okay. Please put it in about it. Thank you, Dr. Manthi. I'm delighted to be here on your panel. My perspective on the latest Supreme Court judgment is that the policy of reservation in Indian Constitution was introduced as a mechanism for creating a level playing field through social emancipation and distributive justice. For reasons of historical discrimination, exploitation, and injustices of certain segments of population, there were two waves of reservation in our country. One, when the Constitution was drafted, and again in 1992 to accommodate the intermediate caste. But the latest EWS introduced in 2019, which was validated by the Supreme Court recently, it smacks of a political strategy, or rather electoral strategy, to appease certain sections. The merit of the issue notwithstanding, the mechanism that has been adopted to provide quota on the lines of the original spirit of the Constitution, it not only militates against the spirit of the Constitution, it also, as I said, smacks of political strategy. I would say this, thus far, as my introductory remarks, and when I have my opportunity, I'll elaborate on this. Sure. We will elaborate on that. Now,
we go to Dr. Ajit Jha. I think that this effort for amendment was clearly a political opportunism. And this Supreme Court judgment is probably one of the most non-serious, non-judicious judgment. Obviously, majority judgment will take the cake of the blame for this. But even minority judgment could not raise really substantial issues beyond one point. It is true that India need to revisit its reservation policy in a general framework, broader framework of affirmative action and positive discrimination. But instead of engaging seriously with this question, we are simply trivializing. And this amendment and this judgment will further trivialization of affirmative action, which is a serious, very, very serious policy instrument for a country like India. Thank you both for your opening statements. There is one strand which is common in both the arguments, Dr. Giri's and Dr. Jha's, that it's an opportunistic stand driven by political considerations. But then if I become a devil's advocate and say, wasn't the OBC reservation given in 1990 by BP Singh government, wasn't also driven by extent political considerations that in the given circumstances, BP Singh and people close to him wanted to regain certain kind of political base and introduced it suddenly in order to overwhelm or surprise the political opponents. Don't you think so? That except for the SC ST reservation, which came part of our original constitutional framework, even the OBC reservation was purely driven by politics. I would like to listen to both the points of view. Dr. Giri? Yes and no. It is largely perceived that it was electorally and politically driven. But if you look at the basis of the reservation in 1992, it is quite different from the original reservations for SC and STs. That was based on caste, but this was based on social and economic backwardness, which was already there in our directive principles of the Constitution, and it is not even a fixed category. There are layered operational issues. There is a creamy layer, and if somebody is getting reservation and is out of that poverty mark and the backwardness mark, he is out of the reservation. So it was not a caste reservation. It is true that the socio-economic backwardness became synonymous with the intermediate caste, so-called other backward caste. But as I said, it is not permanent. You know, you would be in and out of it. So, but the caste reservation, ST and SCs, was permanent. You see, it is based on the ascriptive identity, born identity, which is called SMI, socially marginal identity. They were given reservation. Caste is not changeable, but the socio-economic backwardness is a dynamic category. So it was done as a matter of social justice and distributive economic justice. It was not on the basis of caste. So it is called other backward classes reservation. So it's just a matter of fact that the caste and class became synonymous. But I repeat that it was not fixed. It was changeable. So I think these two were different. There was an economic and social justice angle that drove that change. Although the perception was that BP Singh pulled it out, the Mandal Commission, to checkmate the growing popularity of Devilal, etc. But
These are political calculations and comments. We need to look at the merit and the logic of the reservation that was given in 1992. Thank you. Dr. Jain is now able to hear. He will be intervening, but before that, we would like to listen to Dr. Jha. It can be argued that decision taken by BP Singh government was politically opportunistic, no doubt about that. But if we analyze Mandal Commission report and its implementation, there are substantive justification for that. Number one, OBC reservation was discussed for years. Even before Mandal Commission, there was Kaka Kalekar Commission, but its report was not implemented. And in different states, OBC reservation was already there. In most of the states, OBC reservation was there, in South India also, in North India also. Moreover, that report was very rigorous, as Giri pointed out, it is commonly perceived as reservation for castes. Broadly speaking, sutras in ritual system. But if we go into the list of castes reservation was provided, it was not for Sudras caste. Many Sudras castes remain out of the reservation, OBC reservation, and many castes which are considered to be upper caste, Dvijas in Brahminical ritual system, they were included. And its most important example is of that of Gujarat. Kshatriyas, who were rulers in Gujarat, all known dynasties were Kshatriyas, and it is one of the states where we have Kshatriya caste even now. They call themselves Kshatriyas. They are part of OBC reservation. But Patels, which were not ritually Dvijas, they are not part of OBC reservation. So it was based on very rigorous analysis of social and educational backwardness. That backwardness was well established. And whatever may be the motives, OBC reservation provided opportunities for social educationally backward classes. And in that sense, it was a very important affirmative action and positive discrimination. Unlike that, this legislation for EWS and its affirmation by Supreme Court is not based on any real data, any supportive data, except for fulfilling a kind of political promise or emotional urge that, okay, earlier reservations were caste-based, though it is misnomer, reservation was not caste-based, and we are giving reservation on the economic basis to the upper caste. But there is no analysis, no data, no empirical commission targeting beneficiary groups, what is the nature of backwardness, what kind of benefit is to be provided. No such discussions emerge, which will emerge with every proposal for OBC reservation, be it Patels, be it Jats, be it Maratha. No such discussion, no such comments, no such observations were made either by political authority or judicial authority. Great. I think you made a very pertinent point about the difference between the EWS reservation and the OBC reservation, although both had been driven by political considerations. Now, if Dr. Jain is able to hear, then he can make that initial statement and then we can proceed further. Thank you, Professor Mohanty Saab. Actually, what I have to say is about this EWS reservation as such. Why there is so much hue and cry on this? Why people think it is not right? That is the question. Because if Professor Jha just now said there has not been enough data
for giving this reservation, on what basis you are giving, what are the criteria. So what was the basis of the OBC reservation? Was there any data at that time? No, it was all 1932 caste-based data. I think that was the last caste-based data on the basis of which we have been doing all kind of calculations that we have this much population of OBC or this much of others. So actual empirical data in present time is not either for the OBC or for the EWS categories. But again, question is poverty. Question is people those who have been deprived in terms of their economic resources, or like they have been poor, right? So question, when we talk about EWS reservation, I think the only criteria has been the poverty and the poorness of the people among the general categories class. Again, here it is class. Again, like the EWS, like the OBC, again, it is a class in the sense those people who are, poor, those who are having not enough resources for them, and they are not able to compete at the equal level. I think it is for them only this reservation is being done by the government through the amendment, and also been ratified by the Supreme Court. So criteria is poverty, and I think poverty is the most common criteria among all the reservation system. Although SC ST had a social issues, cultural issues, EWS also had some kind of social and cultural issues, but again economic criteria is there also for OBC reservation, and same is here. Second, the point which I want to say is about that this economic basis, on the basis of which this EWS has reservation is made. Now, this is like a criteria of 8 lakhs rupees annual income, EWS. It is same with this OBC reservation also in the creamy layer data. So question is this, after the entry point, it helps only at the entry point. Like I was speaking to one of my fellow teacher yesterday, who is an ad hoc teacher who has been appointed on the basis of this EWS reservation, and he said, sir, I got this opportunity only because my economic conditions. Now I into this service, but after getting into the service, I will cross this. The bar of 8 lakhs, and I won't be eligible again for this EWS quota. So, this will only help at the entry level quota. What I am saying, not further, not further. So, I personally feel that this EWS reservation is been addressed to long-standing demands, even during Karpuri Thakur time in Bihar. Economic criteria, which Dr. Jain is raising the issue of the economic criteria should be the basis. Well, I would like to ask him the question when he joins, but the fact is, in the Indra Sawhney case, the 9-judge bench had said that no reservation can be possible in India on the basis of economic consideration. So, to overturn that decision, we need to have a 11-judge bench. You can't have a 3-judge bench overturning that issue. Or do you see that the merit in the discussion that along with the historical, social, cultural, economic, social and educational backwardness, economic backwardness is also an element that should be introduced now in the given circumstances? If that is a logic that is coming through, how do you see it? They are not replacing the social and educational backwardness reservations that have already been granted to the Constitution. They are only supplementing it. Though how do you see the supplementation? Because it's not a replacement. Dr. Jha. It is true that economic backwardness can itself be cause for educational backwardness and multiple other forms of backwardness. There cannot be any doubt about that. And most of the India is poor, be it upper caste, be it OBC, be it Dalit.
huge percentage of Indian population is poor and they don't have wherewithal to exercise choices or to develop and utilize opportunities. That is true about that. Point is not that. In fact, the whole policy regime, purpose of economic development, etc., is primarily to provide for opportunities and overcome the disabilities imposed by economic backwardness. Point is that whether reservation for EWS is a right policy framework to achieve that purpose. That is the question. Because the reservation was meant to provide representation. Whatever may be differences about data, exact percentages, etc. See, 1931 caste census was not repeated. That is true. But there is a huge demand, huge agitation for caste census. On the one hand, you are not doing caste census. On the other hand, you are arguing that we have no data. You have data in the last census, you are not releasing that data. But when reservation was provided to OBCs, that was based on very rigorous analysis and rigorous data that these sections are underrepresented in government services and higher educational institutions. For EWS, do we have that data? Whether EWS face multiple difficulties, as all EWS in all castes face multiple difficulties, and government need to come out with solutions for that. Government is not coming out with any solution for that. There are very minuscule number of jobs, and in jobs, whether EWS of general category are underrepresented. Where is that data? Where is that analysis? And if they are not underrepresented, if we have already 10%, 20%, 30%, or 25% EWS represented in government services at different level, then what help this 10% will provide to them? So their problem is different, their crisis is different. Instead of addressing joblessness, instead of providing support, economic and income support, and educational support and scholarships, quality educational institution, instead of that, simply you are trying to emotionally exploit them by claiming that we are providing you reservation. So that is the ploy. And that is a political game in which they want all of us to remain engaged instead of providing causes, reasoning, solutions, data. But Dr. Jha, if I become the devil's advocate again and say that, are you able to hear? Yeah. You can hear, Dr. Jha? Hearing. Yes. Gotcha. If I say that you can say that the upper castes are overrepresented in jobs and in. If you go into it, this reservation is not simply for the Hindu upper caste. It's also for the and Parsis and everyone. Chart committee report told us, and the situation has not improved in so many years. So if Muslims get that benefit, and maybe they would overwhelmingly benefit from this instead
uh, uh, see, that is again a very tricky situation. On the one hand, when people demand reservation for Dalit Christians, Dalit Muslims, then argument comes that in their religion there is no discrimination, so they cannot have reservation. Now, when you go for EBS, then you say that economic criteria is important. You yourself is arguing that. So for affirmative action, caste is not the only criteria. Any kind of discrimination and backwardness and underrepresentation can be criteria for affirmative action, no doubt about that. But point is that OBC Muslims are already part of OBC reservation. It is not that OBC Muslims are not part of OBC reservation. They are part of OBC reservation. And my point is not that Hindu upper caste or Muslim upper caste or Christian upper caste can't be provided with reservation. The point is that whether any of them are underrepresented, whether there is any data about that. And general observation is that they are not underrepresented. See, few thousand poor, relatively poor, 8 lakh is a good limit. They are there in all kinds of jobs. So problem is not that their underrepresentation. Problem is that majority of, whether be it upper caste or lower caste or Dalits or Muslims or Hindus, they don't have quality employment. Overwhelming majority of them. And there is no way they can be provided with employment through any kind of reservation. That was not the purpose of reservation at all. So the crisis of employment has to be with right kind of economic policies. Reservation for EWS is no solution because there is no problem. Poor in upper caste are facing multiple problems. But problem is not that they are underrepresented. It is not that by OBC reservation we are providing jobs to all OBCs or all scheduled castes or scheduled tribes. Only very small numbers get jobs. But Dr. Giri, do you agree with Professor Jha that EWS benefits accrues to the poor Muslims, poor Christians, or poor Parsis, whoever? These are not oxymorons. They are, and of course, yes, OBC Muslims have been part of this, part of the reservation under the backward classes. But there are large number of Muslims who may belong to the relatively upper caste or do not belong to the OBCs, but who continue to be poor. They would benefit. In fact, there is a speculation that, in fact, this is a argument being made by some that maybe the government strategy went wrong because the ostensible reason for giving this was for the Hindu upper caste, but maybe Muslims would be, poor Muslims would in fact walk away with sizable chunk of the EWS reservation. How do you react to it? Well, I want to bring in another dimension which perhaps we are missing. Professor Jha pointed out several operational challenges in EWS, and Dr. Jain also hinted at that. But I think one thing we are missing is the philosophy behind this quota. I've been saying both in 1950 as well as 1992, there was social element. You see, it was the social category
in case of scheduled caste, they were exploited and they were discriminated against. And in case of OBCs, they were, Professor Jha rightly said, they're underrepresented. But let's not miss this point, the social. That social category is unchangeable. You are born into a caste, and economic status, even your religious status, can change. Religious affiliation. But that social reservation remains. Social has not been taken away. No, social has not been taken away. It remains. It is an addition to that. No, that's not the point. So it is not. It is in fact undermining your proposition for this debate. Are we undermining the spirit of the Constitution? So in economic, when you bring in economy, you can address economic disparity in several ways. You see, like you can give them scholarship, give them a loan. But when you give a quota, you are really looking at the historic discrimination and exploitation on the basis of caste. In both reservation, that caste element was there. I am not legitimizing or justifying caste, but that is a historical reality that was taken into account. In EWL, it is purely economic. And for economy, you don't want quota. You can have other mechanisms. That is my point. Well, Dr. Jain, if so we it undermines the Constitution. Dr. Jain, if we the point which Dr. Jha mentioned and even Dr. Giri passingly mentioned about the kind of EWS, the so-called creamy layer which has been excluded. And this was rupees a year income, which works out to 67,000 rupees a month. And what is the below poverty line? Above poverty line, someone who earns 32 rupees is above poverty line. Which would mean if we have 5 members in a family, it would mean it would be something like 150, 170 rupees. That is, you are above poverty line. But you are, which works out to 6,000, 7,000 rupees a month. You are giving 67,000 rupees a month a limit. What is the actual that 90% of India's upper class would come to the rubric? How do you react to it? Okay, thank you. Mohanty sir, actually your voice is breaking, so I could not hear you. But what I could hear you, that 32 rupees. Dr. Jain, can you hear? Yeah, now I can hear. Hello. Your voice was breaking when we was having questions. What I could understand is about the bar of this economic bar, like having 8 lakh rupees yearly income, and also about 32 rupees, which is the average income of the poverty line. So question is that I personally feel this 8 lakhs limit was kept for EWS because of the reason that the OBC also they had kept the 8 lakh rupees as a creamy layer, like that kind of bar was there. So they could not reduce it here. That is why they have not changed any thing from 8 lakh rupees from EWS category in EWS category as it was with the OBC. But my personal opinion is this, that it should be changed in both. It should be changed in the OBC also, and it should be changed in EWS also. This bar of 8 lakh rupees is a little higher as compared to what is the economic condition in today's India with 32 rupees a day income, as you just mentioned. I think it should not be more than 5 lakhs rupees in both the cases of EWS and EWS and OBC cases. I think this is where I have a personal my view that it should be reduced as far as the income bar is concerned for the reservation, and addressing the issue of people in terms of their poverty, because the EWS is purely on economic criteria on the poverty issue, on the income issues. I think the government must have a kind of data. Now they must start having a data collection
in generally about this EWS categories, that what are the kind of income groups which are there, in the 8 lakh rupees bar. And that my personal feeling is this, that it should be reduced from 8 lakhs to 5 lakhs rupees, this economic criteria or income criteria for providing reservation both in EWS and OBC reservation. This is my view on this particular point. Dr. Jha, would you agree that in OBC reservations also the upper limit should be reduced substantially from the 8 lakh that it is today? I think that is missing the point. Main issue is representation, and representation is not in proportion to population. Representation is significant representation. Obviously, OBCs are much more than 27%. The idea behind 27% was that it is a significant representation. It will lift the community's backwardness as far as its relationship to the wider society is concerned. So any reduction should be linked to the data. If there is a representation, adequate representation, then it should be reduced. But if there are no adequate representation, if reducing will make things difficult, then there is no point in reducing. So there is no fixity about that. Earlier, there was no creamy layer at all. A creamy layer was brought back at certain stage. So it is a dynamic policy that will require changes. In my opinion, there should be a policy of de-reservation also, but all that should be based on data and information. Problem with EWS again is not primarily the limit. See, the government passed a legislation with certain limit, and Supreme Court affirmed the amendment with certain limit. My main concern is that whether EWS are underrepresented in government services. And I can say with some confidence, they are not underrepresented. So there are problems and problems and problems, and we need solutions for that. But this reservation is no solution for that. Well, Dr. Giri wanted to respond. Yeah. I just wanted to say, Professor Jha, apart from underrepresentation also, representation depends on merit. It's not political representation. The quota is given at the entry point. So, you create a level playing field. You don't necessarily increase representation, but you enable people to participate and come to a level playing field. But I will insist that the reservation that was done, the principle was different. There should be, certainly, I agree with you, Professor Jha, there should be de-reservation among scheduled castes also. But Dr. Giri, would you like that there should be a time limit to all three forms of reservation? SC, ST, OBC and EWS. That should be a time limit. So how do you react to this? Okay, let me respond to that. In fact, the time limit was initially set for 10 years, but it has been extended, and it did not perhaps happen in 10 years. Among scheduled caste, scheduled tribe category, there should be a de-reservation policy. I do not know whether we can set a time limit there. OBC, it's already there. People are coming in and out of the category. But EWS, to my mind, should be scrapped to lock, stock and barrel as a quota. The poor can be addressed and catered to by several other means, not by quota. The principle and philosophy behind quota was social exploitation and discrimination. In EWS, that is not there. You cannot extend the spirit of the Constitution. Dr. Jain, if you have been advocating about the EWS reservation as valid, so will you say that if this has extended the reservation limit from 50% to 60%, Jharkhand has made it 77%, different states have already increased, and there would be
increase in demand from Patidas, from Patels, Gujars, and everywhere for reservation. And possibly now that even the Supreme Court has affirmed that 50% is not inviolable, so everyone would be prompted to give more and more reservations to this. So in keeping that view, will it be a good idea that we rather make a caste census and give reservation in proportion to the strength of your caste all across the board, 100%? Good idea. Well, I think this point, what you are making, in the present circumstances, is the governments, the state levels, what they are trying to provide the reservation as it happened in the South India and now it's coming to the North India. As you said rightly, in Gujarat, they demand, in Rajasthan, they demand for the Gujars and the Patels and all. And in Jharkhand, they have already made 77% reservations. I think this demand will keep going and increasing further, and it will lead to a further Pandora box. And almost all the states, I think, in according to their political situation, they will try to give as much reservation because it attracts the most voters, and that is simply it's a politics. But I personally feel in the present situation, the politics of this country, which has become definitely a caste-oriented politics, completely caste-driven politics, there is a need of caste census now. There is a need of caste census. Let us have this. At least some data should be there. Why there should be a demand only that we are this much and therefore we want this much reservation? Let have some empirical data. And I think the demand for caste census, which has come from Nitish Kumar in Bihar, and I think it is gaining momentum now with this reservation based on the caste in different states. I This demand probably should be accepted by the center and they should go on. I think Bihar government has already decided to go on with this caste data and maybe they will have next year this caste data. So why not let this to be with all India census itself? The caste data should be there, and on the basis of that empirical data, let us see what representation is there of which caste, and then their socio-economic backwardness also should be taken into ground, not only their economic criteria. Let's have socio-economic background also, right? As far as EWS is concerned, it should also continue like OBC is continuing. I am just saying, as per the government or as per the constitutional makers in envisaged at the time of the constitution that this reservation for SC ST will go for only 10 years. Probably we need only 10 years. Now we are almost going to have 100 years of our independence in 2047. Let us make 2047 as the end of all the reservations. This is my submission, personal. Less this 100 years of the independence to be marked by no reservation for anyone. Let the state, let the government make all the efforts to bring up all those sections of society who are deprived, who are poor, and they should be, brought at the level where they can have equal status and equal footings, and they can have things at the level of equality. Well, Let I this go target to to be set. Let this Professor target to be Ajit. set by the government. Yeah, thank you. Dr. Ajit, will you be amenable to the idea of a caste census? Necessary, and that is particularly necessary because those who are opposed to positive discrimination and affirmative action, they create this issue again and again about what is the real number of OBCs, and that is creating lots of problems. So in fact, what happens that elite in our country, in their own short-sightedness, they invite demands which is against them. They are so angry. They are so unreconciled with the social realities of this country that they themselves create these issues. So now caste census demand can't be avoided because they have created this situation again and again. So that is very important.
as far as no reservation is concerned, I think our resolve should be no discrimination, no backwardness on the basis of identities. We should plan for that. We should have policies for that. Thinking in terms of having reservation or not having reservation, that cannot be central organizing principle. Idea is to develop India economically, but we need egalitarian India where accidents of birth are related, which is not the case today. So with that resolve, we should approach policy of reservation, we should expand affirmative action and range of positive discrimination for all sections of population. Of course, socially and educationally, historically backward caste, but majority of Indians are poor of all castes. So until unless we think of imaginative, creative economic development model, we will be fighting amongst ourselves. We will be suffering a lot. A reservation can help to some extent, but it cannot resolve all problems which as a society and economy we face. It is a very sad situation where we reduce all debates to the reservation and reservation alone. And through reservation, we want to resolve all our problems. But will Dr. Giri, if we make this provision for 100% reservation on the basis of your proportion of representation on the basis of a task census, will the sub-problem be solved once and for all? Or will there be still persisting problems? Well, that can be a demand for special reservation for women, for example, in educational institutions, in jobs. How would you react to this? Well, I would tend to agree with Professor Jha, but there is a problem in a kind of Martian approach, whether the economic development can erase or subdue all other identities. That is doubtful. It has not happened anywhere. So if it is caste, some other social or cultural identities will emerge. So we'll have to deal with them. In principle, yes. But if you make caste as a category for policy formulation or unit as a policy formulation, what do we do with the other religious group where there is no caste, like Christians or Muslims? Where do you fit them? So we have to be cognizant of that, because there are also a sizable number. But yes, in principle, I would agree that there should be a caste census. And if you are talking of reservation or quota, it should be in proportion to the particular caste. I agree in principle. But the operational difficulty that I was pointing out, what do we do with the minority, other religious groups, non-Hindu groups, even Buddhists, which, of course, they also would say will not mention our caste. So that could be a problem. Now we'll go for concluding remarks that I'll ask everyone, all the participants to say, if you are a policymaker, keeping 10, 20, 30-year perspective in mind, in this issue of reservation, what would be your prescription, given the reality of SC ST reservation, OBC reservation, and now the EWS reservation? What would be your prescription for the future? Dr. Jain, start with you. Thank you. As far as if I think in those lines, I think the reservations for SC ST is the one which is the only reservation which I think should be continued, because they have faced a deprivation for a very long period of time, thousands of years. Yet they have to come at the equality level in terms of social equality. So that is one reservation for which I am there. But rest of the reservation, according to me, should not extend beyond 2047 after the completion of 100 years of India's independence. And I think that if that happens, that will be the real achievement of the 100 years of the independence of this country. This is my personal view. All these EWS and OBC reservation should be experimented till 2047 and see the results. And again, based on the data,
out of the caste census, you can see their representation also, how much it has helped them to raise their representation in the government jobs and educational institutions. So this is what I would say about the extension of the reservations. Thank you. Oh, okay. Hello. Dr. Jha, Yeah. your concluding remark. Reservation should continue as till it achieves its purpose, but at the same time, our imagination for affirmative action and positive discrimination should go beyond reservation. We must think of many other measures which need to be adopted, supplemented, so that we can achieve the purpose of reservation as fast as possible. Otherwise, it will become a blunt instrument and it will create lot of animosity within the reserved groups. Within the scheduled caste, there will be demand. There are already demand for classification. Within the OBCs, there are demand for classification and sub-classification. There are demand for new groups entry into the groups. So until and unless... Okay, we're just running out of time. Dr. Giri, you make your concluding remark, then we proceed. Just in 30, 40 seconds. One sentence. The whole reservation policy should be revisited. All reservations should be revisited, and reservation should continue with de-reservation possibly, but it's certainly seriously, ingenuously revisited. Thank you. Thank you, Dr. Giri, Dr. Jha, and Dr. Jain for participating in this deliberation and illuminating the discussion. I think the audience immensely enjoyed and benefited from this discussion. We will look forward to your support to this Aaj Kal platform in the days to come. Thank you so much. आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं पीसी सिंह। आज की जो चर्चा है वो आर्थिक आरक्षण के ऊपर है। हमने जो बेसिकली इसका जो इश्यूज है वो ये है, जो आपको देखेंगे कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि क्या आर्थिक आधारित आरक्षण का जो निर्णय लिया गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई है, और उसके काउंटर में जो बिहार में, तमिलनाडु में, बाकी जगहों पे जो उसका रिएक्शन आ रहा है, झारखंड में, तो क्या इसका इम्प्लीकेशंस क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। लेकिन मैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले मैं एक अपने जिनको मैंने आज इनवाइट किया है, जो इस पैनल डिस्कशन में शिरकत कर रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको परिचय दे देना चाहता हूं। एक तो हमारे सहयोगी है प्रोफेसर देवेंद्र सचान, और देवेंद्र सचान प्रायः मेरे डिस्कशन में रहते हैं। उसका कारण क्या है ये मैं आपको एकदम क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि मेरी ये सोच होती है किसी चीज के ऊपर जो डिस्कशन हो उस पर एक जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट इमर्ज करके आए। सचान सर भारतीय परंपरा और सनातन धर्म के में अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, और ये कोई नई बात नहीं है उनके साथ। सबसे जो आजकल कई लोग हो गए हैं वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जो सबसे बड़ी बात है, ये जितना दिन से मैं इनको जानता हूं तो वो इस बात को, मतलब इसी बात को बोलते आ रहे हैं। आज ऐसा नहीं है कोई नया ही वो बन गया। चलिए, ये तो सचान सर की बात है। जो दूसरे पैनलिस्ट जिनको आप देख रहे हैं उसमें मैं स्वागत करता हूं अशोक कुमार सिंह का, AK सिंह, प्रोफेसर AK सिंह, जो अभी जुड़ गए हैं और अब वो दयाल सिंह कॉलेज के प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में। मैं उनके ऊपर मैं बात मांगूंगा। अभी हमारे सामने सुशील कुमार सिंह है। सुशील कुमार सिंह का पूरा जीवन पत्रकारिता में गुजरा है। पत्रकारिता से मेरा मतलब है हिंदी पत्रकारिता और रिपोर्टिंग। कलकत्ता से रविवार से इनकी शुरुआत होती है और फिर वो दिल्ली में, जो सहारा में और बाकी जगहों में भी काम किए हैं। और जो इनकी खूबी है कि मुझे जब भी कुछ जरूरत पड़ती है किसी चीज छोटी सी, मैं कोई कभी भूलता हूं, मैं इनसे संपर्क करता हूं, और इनकी याददाश्त और एक एक कंस्टिट्यूएंसी का जो असेसमेंट इनका होता है, काफी इनके पास इंफॉर्मेशन होते हैं चूंकि पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार सिंह जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज में, और
अब 40 साल से हमको लगता है कि वो पढ़ा रहे हैं वहां पे। लेकिन जो विशेष बात वो ये है कि हम जानते हैं इस बात को, मैंने कल जो किया है उसमें भी मैंने उनके बारे में चर्चा किया है। घर में समाजवादियों का अड्डा हुआ करता था देवघर में, और जो देवघर अब झारखंड का हिस्सा है, इसलिए जो उनकी बात हम आपके सामने रखेंगे, तो वो अपनी बात को रखेंगे तो आपको बिहार का भी असेसमेंट मिलेगा, दिल्ली का भी असेसमेंट मिलेगा, और झारखंड का तो विशेष रूप से मिलेगा। हमने जो चर्चा करने का विषय किया है कि जो आरक्षण का जो फैसला लिया गया है 2019 में जो हुआ था, और अभी उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो मुहर लग गई है, जो 10% आरक्षण 50% के अलग उन लोगों के लिए दिया गया है जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं और जो ओबीसी और दलित और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में नहीं आते हैं। इसके रिएक्शन में आज मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड में जो प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूं, तमिलनाडु में खास करके तो स्टालिन काफी अग्रेसिव थे, और झारखंड के तो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो 77% आरक्षण का ओबीसी के लिए कर दिया। और बिहार में भी हम 2 दिन पहले की खबर बता रहा हूं आपको, जो महागठबंधन का जो डेलीगेशन है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला है, और उन्होंने जोर दिया कि ये जो आरक्षण का लेवल इसको बढ़ाया जाए। तो मिला जुला कर जो मैं देख रहा हूं कि जो गोलबंदी हो रही है इस मुद्दे के ऊपर में, वो इसी तरह की हो रही है कि मेरा सवाल सीधा सा है, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब मैं आपकी बात को सुनूंगा कि क्या जो इस तरह का माहौल बन रहा है, क्या ये मंडल 2 हो पाएगा? जो 1991 में जो मंडल के आधार आरक्षण के सवाल पर जो आंदोलन हुआ था पूरे देश में, क्या इस तरह का कुछ वो रूप ले पाएगा? तो इस पूरी कहानी की शुरुआत मैं चाहता हूं कि अशोक कुमार सिंह से बात करें सबसे पहले, और 91 में भी एक्टिव थे, अभी भी जानते हैं इस बात को, अभी उनका आना जाना लगा रहता है। अशोक कुमार सिंह। धन्यवाद। मेरी आवाज जा रही है? एकदम जा रही है। पहुंच आपकी रही है? फोटोग्राफ जरा उसको, हाँ एकदम आप सामने हैं, आपकी आवाज क्लियर है। धन्यवाद डॉक्टर सिंह और मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स। ये अपना वीडियो ऑन कर लीजिए जरा, वीडियो फोटो वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो ऑन कीजिए। हाँ अब ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है डॉक्टर सिंह, मेरी आवाज जा रही है? यस। बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए अपनी इस चर्चा में। और ये एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है, और इसकी, जैसा कि आपने कहा, इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आप इसको काका कालेलकर से जोड़ें, कमिटी से, और फिर मंडल कमीशन के रिपोर्ट से, और फिर 77 से मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जब मंडल कमीशन मोरारजी भाई की सरकार ने बनाई, और फिर बाद में उसका रिपोर्ट आया, और फिर जब 89 में वो लागू विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने करने की कोशिश की, और उसके बाद जो आंदोलन चला, तो एक आरक्षण तब से लेकर आज तक एक आप कह सकते हैं डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। और उस पूरे एक डिबेट में अब एक नया उसका एक एंगल ये आ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको भी 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो आ रही हैं कि जिसमें आरक्षण जो पहले जिन लोगों को मिल रहा था, अब आरक्षण जिस नए वर्ग को देने की कोशिश हो रही है, तो इसमें एक इसका कोई एक पक्ष लेकर हम नहीं चल सकते हैं। ठीक है, वो एक वोट बैंक का मुद्दा है, जिस आधार पर आज आर्थिक रूप से आरक्षण लागू करने की जो मंशा सरकार ने जाहिर की है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपना मुहर लगाया है। तो पहले से जो चीजें चली आ रही थी, जिसमें कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, SC ST के लिए, और अब एक नया वर्ग बनाया गया है जिसमें खास करके जो सवर्ण जाति के लोग हैं और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको ये आरक्षण मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक विमर्श को एक नया मोड़ देगा, एक नई तरह से फिर डिबेट की शुरुआत होगी, और मैं समझता हूं कि ये डिबेट अभी आगे चलेगी।
धन्यवाद। लेकिन आपसे सवाल ये है, खास करके फोकस करते हुए मैं जिस चीज को पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये वर्डिक्ट आया तो कई लोगों का एतराज ये था उसमें एतराज ये था कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे रहे हैं, आर्थिक आधार के ऊपर में आप आरक्षण दे रहे हैं, तो जो जिन लोगों के लिए 10% आरक्षण तय किया गया है उससे कहीं ज्यादा गरीब ओबीसी में सेक्शन में है, दलित में है, ट्राइबल में है, उनको नहीं किया गया। तो कहीं उनके साथ अनदेखी तो नहीं की गई है और स्टेप मदरली ट्रीटमेंट तो नहीं किया गया। और उसके खिलाफ जो आंदोलन अभी जो रिएक्शन आया है बिहार में, नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री जो झारखंड के हैं उन्होंने 77% कर दिया। तो ये क्या ये मंडल का रूप ले पाएगा क्या, जो इस आरक्षण के अगेंस्ट में जो। धन्यवाद। मुझे लगता है जो प्रश्न आपने उठाया है वो बहुत ही मौलिक प्रश्न है। और जहां तक मैं समझता हूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में वो जो चीज हम पाते हैं वो SC ST से थोड़ा अलग है। जैसे मैं विश्वविद्यालयों में हर वर्ष बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, उनकी जो प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो नॉन क्रीमी लेयर है, गैर मलाईदार तबका है, वो एक तरह से आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग, जिसको हम कहते हैं नॉन क्रीमी लेयर। तो 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में जो नॉन क्रीमी लेयर के लोग हैं वो वहां शामिल हैं। तो आप जब ये कहते हैं कि उनमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, मैं समझता हूं कि वो आरक्षण ले रहे हैं, वो आरक्षण की सुविधा उन्हें है और SC ST को भी है। और ये जो ये एक नया वर्ग एक तरह से सामने आया है जिसमें कि सवर्णों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको दिया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये आंदोलन का रूप ले सकता है। मुझे नहीं लगता है कि वो स्थिति पैदा होगी, क्योंकि आप इसको 90 के मंडल आंदोलन से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, एक अच्छा आयाम सुनने को मिला। थैंक यू अशोक। नहीं, ये इसी बात पर सुशील, आप क्या, आपकी सोच क्या है? ये कहा कि देखिए वो 91 वाला मंडल ये नहीं बन सकता। हमारी ये सोच है कि ये कोई बड़े आंदोलन का रूप नहीं लेगा। ये नहीं, मैं समझ गया। नहीं, इस पर कोई बड़ा आंदोलन ठीक है, आपकी बात समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं वो एक काफी स्ट्रांग आर्गुमेंट है आपका। तो मैं सुशील से बात करना चाह रहा हूँ, सुशील कुमार सिंह से, कि आप बताइए कि आपको तभी तुरंत आते हैं बनारस से, कभी पटना से, आपको जमीनी स्तर पर क्या लगता है, क्या ये जो महागठबंधन है इसको बना पाएगी? प्रोफेसर अशोक सिंह जी से सहमत हूं कि ये जो 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया उसका रिएक्शन पिछड़ों में होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछड़ों को 27% ऑलरेडी मिल रहा है। उसको लेके काफी जब ये मंडल कमीशन लागू हुआ तो काफी देश भर में बवाल हुआ, कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। उसके बाद नरसिंह राव ने भी 92 में एक बार कोशिश की थी सवर्णों को 10% देने की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं 49%, 50% से ऊपर एक्सीड नहीं करेंगे। तमिलनाडु को छोड़ के कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें 50% से ऊपर, अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट के नए वर्डिक्ट से पहले तक 50% से ऊपर एक्सीड नहीं करता था। इसमें हुआ क्या है कि अब देखिए ये जो सवर्णों को खुश करने की राजनीति थी बीजेपी की, जो केंद्र में शासित है, और कुछ नहीं। उसके पीछे का बैकग्राउंड मैं बताऊं आपको। 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन एक्ट पर अपना वो टिप्पणी की थी, उस पर एक स्ट्रिक्चर दिया था कि उसमें बदलाव की जरूरत है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्चर जो होता है वो मान्य होता है सरकार के ऊपर कि उसको सरकार को बदलना होता है। उस पर पूरे देश भर में बवाल हुआ। SC ST हरिजन एक्ट, SC ST एक्ट वाले मुद्दे पर पूरे देश भर में बवाल हुआ। सरकार को घुटने टेकने पड़े और वो अमेंडमेंट ला के उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। उससे सवर्णों में गुस्सा आया, सवर्ण नाराज हो गए, क्योंकि हरिजन एक्ट से SC ST एक्ट से सबसे ज्यादा पीड़ित सवर्ण या दूसरी जाति के लोग थे। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि हरिजन एक्ट
कि में ये कमियां हैं, कई बार गलत लोगों को भी फंसा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से सवर्ण वर्ग सबसे ज्यादा खुश था, लेकिन SC ST का जो वोट या उसकी नाराजगी ना झेलनी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे SC ST की पार्टियां जो हैं, जो उसकी चैंपियन पार्टियां हैं, वो मोदी सरकार को समर्थन कर रही थी, जैसे रामविलास पासवान की पार्टी या अठावले की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। तो उसमें हुआ क्या कि दरअसल सवर्ण के प्रति बीजेपी को सवर्णों का वोट तो ऐसे भी मिलता, उनको सवर्ण को ऐसे कोई वोट बैंक नए सिरे से हासिल करने की जरूरत नहीं थी, उनके पास सवर्ण। लेकिन एक सवाल है आप दोनों से, सुशील और अशोक दोनों से एक सवाल है कि अगर ठीक है, बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट आप लोग का, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि वो उस तरह का रूप नहीं ले पाएगा, तो फिर आखिर कारण क्या है कि आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पूरे देश में कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, झारखंड के मुख्यमंत्री 77% आरक्षण का लेवल बढ़ा दे रहे हैं, और महागठबंधन के लोग भी। इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है इसका, क्या ये चाहते हैं लोग? अशोक। डॉक्टर सिंह, जो अभी सुशील जी ने बात कही और जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, देखिए उसको आप चाहे वो बिहार हो या झारखंड हो, और केंद्र सरकार का जो ये फैसला है, सबके अपने अलग अलग कंटेक्स्ट हैं। झारखंड में शायद आपको नहीं मालूम है कि अब तक वहां ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू नहीं हो पाया था, अब जाकर के वो चीजें सामने आई हैं, और उस राज्य की एक स्थिति अलग है, उसको आप बिहार से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आदिवासी बहुल राज्य है, वहां पर हेमंत सोरेन अपनी राजनीतिक प्रक्रिया में उन चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ओबीसी के लिए उन्होंने 27% आरक्षण अब जाकर के हुआ है, जो बिहार में पहले से लागू था। तो उसकी वहां का जो कंटेक्स्ट है वो अलग है। जहां तक बिहार का प्रश्न है और नीतीश कुमार जो चीजें कर रहे हैं, तो जातीय जनगणना के विरुद्ध तो कोई नहीं है। हम सभी मानते हैं कि अगर जातीय जनगणना होती है, कास्ट सेंसस होना चाहिए, उसका विरोध करने का कोई आधार नहीं है, उस आधार पर पता चलेगा। उनका मकसद क्या है वो जो कर रहे हैं कि उसका मकसद तो यही है ना कि अगर जो जातियों का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, अगर उसका असेसमेंट आ जाता है सही में, तो उसी अनुरूप उनको रिजर्वेशन चाहिए, यही तो मकसद है उनका पूरे इसका। और क्या चाहते हैं वो? नहीं, वो उनका मकसद है, तो उनको फिर ये भी समझना पड़ेगा कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में जहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण चला आ रहा था, तो उसके बाद कहीं न कहीं ठीक है, उससे व्यक्तिगत तौर पर हम सहमत हो ना हो, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था यह महसूस कर रही है कि सवर्ण जातियों में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। यहां तक कि अन्य पिछड़ा वर्ग के भी कई ऐसे समुदाय हैं जो आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध हैं बनिस्बत उन सवर्णों के। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये आरक्षण लागू किया जा रहा है, और आगे चल करके ये विमर्श का मुद्दा बन सकता है। मैं दोबारा पुनः मैं कह रहा हूं, ये वाद विवाद का मुद्दा बन सकता है, लेकिन इस पर आप किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत कर पाएंगे ऐसा मुझे महसूस नहीं होता। अच्छा शशांक सर, आपको क्या लगता है कि क्या जो ये जो महागठबंधन के लोग इस बात को बार बार, जैसे ही हुआ ये असेसमेंट, नीतीश कुमार ने डिमांड शुरू कर दिया कि पूरे देश में, पहले तो बिहारी की बात कहते थे कि पूरे देश में जाति के आधार पर सेंसस होना चाहिए। देवेंद्र सचा, नीतीश कुमार ने कहा कि अब पहले बिहार की बात करते थे, बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, बिहार में जो जातिगत जनगणना होना चाहिए। अब पूरे देश में जनगणना की बात कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं सिर्फ बिहारी नहीं कि कई राज्यों, जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उनको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। एक तो मैं समझ सकता हूं कि उनका अपना एम्बिशन है 2024 के चुनाव में, लेकिन मेरा मुद्दा ये, मुख्य मुद्दा ये है कि क्या इस आधार पर, जैसे अशोक और सुशील दोनों कह रहे हैं कि नहीं, इस पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता है, क्या आप उन लोगों से सहमत हैं? और अगर आप तीनों इस बात को सोचते हैं तो मुझे थोड़ा सा एक और चीज मैं जानने का कोशिश कर रहा हूं कि ये जो गोपालगंज में जो अभी इन लोग चुनाव जो हारे, ये लोग महागठबंधन के लोग, तो क्या ये एक आइसोलेटेड घटना इसको समझ लिया जाए? क्या ये महागठबंधन के, मतलब नीतीश कुमार और लालू यादव के इकट्ठा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है? मतलब जो भाजपा का जो पेनिट्रेशन है वो अभी भी, जो जलवा है अभी भी मौजूद है। शशांक सर।
देखिए सर, आपने इलेक्शन और ये चुनाव को पहले इसको हम अलग करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है आरक्षण की। नहीं, मैंने इसलिए किया कि अल्टीमेटली देखिए, अल्टीमेटली चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये सदा व्रत करने का, ये सब हम लोग को पता है। मकसद क्या है कि अल्टीमेटली इसका पॉलिटिकल डिविडेंड्स क्या होता है, इसलिए सॉरी, बताइए। सिंह साहब, देखिए ऐसा है कि ये जो बिहार का जो आपने नाम लिया है, एक्चुअली ये जो आरक्षण है, एक हम बिहार की बात जब करते हैं, बिहार में इतने दिन आरक्षण के बाद भी वहां पर आज भी जातिगत समीकरण तो बने हैं, लेकिन जो छोटा वर्ग है वो कभी ऊपर नहीं आ पा रहा है। एक तरह की ये कह सकते हैं कि उनको आपने एक बाउंड्री में उनको खींच रखा है, बाउंड्री बांध रखा है। अगर ये जातिगत इसी तरह से आरक्षण बना रहा, जो क्योंकि मेरा पिछला ये 10-15 सालों से जो मैं इस पे देख रहा हूँ आरक्षण के, इसमें मैं एक कंक्लूजन पहुंचा हूं कि जब तक इस आरक्षण को जाति से जोड़ा जाएगा तो देश के लोग जो है वो कभी शिक्षित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम कभी शिक्षा की तरफ नहीं ध्यान देते हैं। केवल एक आरक्षण को लेकर के जाति को हम वही गुमराह करते रहते हैं कि तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी होती है कि हमारा हर किसी का एक शिक्षा का स्तर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। देखा ये ज्यादा जितने भी आपने भी जो पिछड़ा वर्ग और जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे है। क्योंकि आजकल हम जो शिक्षा को देखा जाए तो वो शिक्षा हम नहीं दे पा रहे, उसका स्ट्रक्चर, उसका स्वरूप नहीं बना पा रहे हैं जो सब जगह वो एक जैसा लगे। तो एक तो बिहार का ये चीज देखने को मिली पिछले 10-15-20 सालों में, जो मेरा एक अपना ये मानना है। दूसरा बात है कि बिहार जैसे प्रांत में जो जितनी भी बातें आपने कही है, वो उससे लगता है कि बिहार कभी भी इससे वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और जहां भी जिस एक बिहार ही नहीं, जिस किसी राज्य में इस तरह का हो रहा है, वहां वो सिर्फ उसी में फंस कर रह जाते हैं। हम कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एक आरक्षण वो चीज है कि इससे हमको कुछ सोचना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। या तो हमें आर्थिक सिर्फ लेना पड़ेगा, जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग उसमें कोई भी हो, आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है, हमें उसको ही केवल आरक्षण का मिलना चाहिए। एक टाइम फ्रेम में बांधना पड़ेगा, टाइम फ्रेम के बिना नहीं हो सकता है कि वो बस ठीक है सिद्धांत सर, थैंक यू। एक और चीज है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुआ, लेकिन जब कहीं से ये खबर आने लगी तो मैंने बहुत अपने दोस्तों से बात किया, उसमें सुधीर जी भी थे, कई एक्सपर्ट से भी। जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कैटेगरी है, जो वर्डिक्ट में आया है, और उसमें क्लियर कट कर दिया है कि नॉन ओबीसी, नॉन दलित, नॉन ट्राइबल। तो ओबीसी ये क्लियर तो हो गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ये फॉरवर्ड तो है। तो क्या ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में पीपल फ्रॉम आउटसाइड हिंदुइज्म, मतलब तो सवर्ण के अलावा भी लोग आएंगे, माइनॉरिटी भी आ सकता है, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं है कहीं भी, और कहीं अखबारों में भी इसके ऊपर चर्चा नहीं। लेकिन जब पूछा गया, मैंने एक्सपर्ट से पूछा, जो लॉयर हैं, जो उन्होंने इसको देखा है, या बाकी और भी, उनका भी यही कहना कि देखिए क्लियर कट नहीं है। तो 10% का जो आरक्षण है, उसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के आएंगे ही आएंगे, उसमें चाहे वो हिंदू के हों, या क्रिश्चियंस हों, या मुस्लिम्स हों, या कोई और है। क्या इस बात पे आपको लगता है कि फिर ये भी मुद्दा बन सकता है? ये बात जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, जो मैं समझ रहा हूं, इसको मैं एक इंटरप्रिटेशन ही कह सकता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये कई लोग दबी जुबान में इस बात को बोल रहे हैं। और कई जगह इस पे जो मैंने बात किया, तो मुझे 2 एडवोकेट से मेरी बात हुई, तो उसने भी यही कहा कि एज पर द एक्ट जो उसमें लिखा हुआ है, उसका मतलब यही होता है। तो आने वाले दिनों में इस पर क्या हो सकता है, आप लोग का क्या असेसमेंट है? अशोक, आप बताएं। हाँ अशोक। डॉक्टर सिंह, आपने जो सवाल उठाया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी ये चीज स्पेसिफाइड नहीं है कि ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है, वो क्या सिर्फ हिंदू समाज तक सीमित रहेगा, या
जो दूसरे हमारे देश में जो दूसरे कम्युनिटीज हैं, दूसरे रिलीजन है, उनके लोगों को भी मिलेगा, ये बात स्पष्ट नहीं है। लेकिन आप जब इसको गौर करेंगे तो जब ईडब्ल्यूएस की बात, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात आती है, तो ज्यादातर विश्वविद्यालयों में जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसमें भी इसको हिंदू सवर्ण जातियों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। अभी तक कहीं भी इसमें मुस्लिम समाज या सिख समुदाय या और भी जो हमारे दूसरे कम्युनिटीज है उनके लोगों की बात नहीं हो रही है। तो अब ये न्यायालय पर ही निर्भर करता है, और जो न्यायविद है और सरकार भी उसको स्पेसिफाई कर सकती है कि क्या भाई ये 10% जो आरक्षण है इसमें हिंदू समाज के सवर्ण के अलावा जो आर्थिक रूप से पिछड़े दूसरे समुदायों में है, क्या उनको भी लेंगे? तो ये बात उनको क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये सवाल, हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि अगर ये ओपन हो जाता है कि ये अवेलेबल है, मतलब ये 10% में हिंदू के नॉन हिंदू भी, माइनॉरिटी भी आ सकते हैं, मुसलमान भी आ सकता है, क्रिश्चियन भी आ सकता है, तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये वेग है, इट इज नॉट क्लियर। हमको याद है कि एक बार जब खास करके राजन सच्चर कमीशन के रिपोर्ट आने के बाद जब ये तय हो गया वो कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार कि हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, उनकी स्थिति कोई दलितों से बेहतर नहीं है। तो इस पे बीजेपी में मुझे एकदम याद है, और मैं देख रहा था, पीछे उसको चेक भी कर रहा था, अडवाणी जी ने अपने पुस्तक में भी इसकी चर्चा करी है, और उसमें वो कहा गया था कि देखिए ये जो आरक्षण का जो मुद्दा है वो जात के आधार पर है, जो मंडल कमीशन का पूरा है कि जात के आधार पर है। तो इस पे इंटरप्रिटेशन, तो क्या अगर इस तरह की बात होती है कि मुस्लिम्स भी अप्लाई करें तो फिर विरोध करेंगे बीजेपी, नहीं करेगी? हालांकि ये बड़ा ही हाइपोथेटिकल सवाल में पूछ रहा। सुशील, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं इसमें कि देखिए, कोई भी आरक्षण जो होता है दो होता है। एक केंद्र एक्ट बनाता है तो केंद्र की नौकरियों के लिए, ये केंद्र की शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन के लिए ये आरक्षण है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स अपने यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग या SC ST आयोग बना के अपने यहाँ तय करते हैं कि कौन उनका पिछड़ा है, कौन SC है ST, ये करती रही है। हुआ आपने देखा होगा बिहार में मुस्लिम पसमंदा मुसलमानों को भी नीतीश ने आरक्षण में व्यवस्था की। और न सिर्फ, मैं 2 राज्य को तो जानता हूँ, बंगाल और बिहार, जहाँ OBCs जो मुस्लिम हैं उनको आरक्षण मिलता है, और उसको केंद्र में भी मिलता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए भी बहुत से मुस्लिम OBCs अप्लाई करते हैं और उस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, और कईयों का होता है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि अभी तक कोई आरक्षण व्यवस्था माइनॉरिटीज के लिए नहीं है केंद्रीय स्तर पर। अब राज्य स्तर पर एक वहां है, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई जगह जो जिसको हम माइनॉरिटी बोलते हैं वहां मेजोरिटी में है, उसके लिए भी अब एक हो रहा है कि वो अब तय करें कि वहां मेजोरिटी कौन है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को नहीं मिलना चाहिए वहां पर। तो ये दिक्कत नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी आएंगी। अब रही बात इसकी आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है उस पर 10% क्या दूसरे माइनॉरिटीज को मिलेगा कि नहीं? जैन और सिख और बौद्ध को तो मिलेगा, उसको उनको तो हिंदू समाज का पार्ट समझ के समाहित किया गया शुरू से। इनको माइनॉरिटी का दर्जा हालांकि जैन को भी मिल चुका है और बुद्धिस्टों को भी मिल चुका है और सिखों को भी शायद है। आई एम नॉट कंफर्म, अशोक जी कंफर्म करेंगे, सिख माइनॉरिटीज में आते हैं या हिंदू धर्म का ही पार्ट माना जाता है अभी तक? मेरे ख्याल से माइनॉरिटी का दर्जा मिल गया उनको। तो लेकिन बावजूद इसके उनको चूंकि हिंदू धर्म के पार्ट एंड पार्सल माने जाते थे, इसलिए उनको आरक्षण की व्यवस्था वहां है। मुसलमानों को और क्रिश्चियन को नहीं है। इवन केरल में भी क्रिश्चियन बहुत हैं, मुसलमान हैं बहुत, लेकिन उनको वहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। केंद्रीय नौकरी में भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट, वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया है। बिहार और बंगाल ने OBC कैटेगरी में मुसलमानों को दिया है। तो हो सकता है कि आर्थिक ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो जो माइनॉरिटी के आर्थिक रूप से कमजोर लोग हों उनको भी दे, और कोई प्रोविजन बना के। कोर्ट में चैलेंज होगा, होता रहा है। मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के अनुशंसा के अनुसार आप सबसे पहले आर्थिक आरक्षण, आर्थिक रूप से
अगड़े लोगों को आरक्षण 3% कर्पूरी जी ने किया था उनकी अनुशंसा मुंगेरीलाल की मानते हुए, बाद में कोर्ट में खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार भी चली गई, वो अलग बात है। और इवन महिलाओं को, जैसे मैं बता रहा हूँ, बिहार में उन्हीं ओबीसीज में 33% महिलाओं को आरक्षण है, वो बिहार गवर्नमेंट ने किया। तो स्टेट गवर्नमेंट के अपने कुछ वो होते हैं जिसमें वो कर सकते हैं, उनके पास वो ये है, अधिकार है। वेरी गुड। एक चीज कोर्ट में चैलेंज होने वाली बात तो ये है, वो तो अलग बात है कि ये मामला इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट में जाए। नहीं ठीक है। अशोक से एक इसी से जुड़ा हुआ बड़ा मुझे स्ट्राइक बार बार आ रहा है, क्या ये जो मुसलमानों की बात हुई, जिसे बीजेपी ने इसका कहा कि जो आरक्षण का जो आधार है वो जाति के आधार पर किया गया, क्या ये मंडल कमीशन का भी एथॉस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और बाकी, क्या ये भी उसी स्पिरिट का है? क्या मंडल में भी इस बात की है, मतलब क्या मंडल कमीशन का जो स्टैंड है उस पर क्या कहना है? सवर्णों के संदर्भ में नहीं, माइनॉरिटी मुस्लिम्स वगैरह के लिए। अच्छा, ये डॉक्टर सिंह ऐसा है कि दरअसल कई बार हम चीजों को आपस में थोड़ा अलग करके देखना पड़ेगा। आप तो समाज शास्त्र के भी विद्वान हैं। आंद्रे बेते ने बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन किया और बैकवर्ड क्लासेस में कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी, जब बैकवर्ड क्लासेस का को डिफाइन करते हैं प्रख्यात समाजशास्त्री आंद्रे बेते, तो वो कहते हैं कि द बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूड एससी, एसटी एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस, और इसमें ये सारी बातें हो जाती हैं, तो वो एक अलग वर्ग हो जाता है। अब जब हम मंडल की बात करते हैं तो मंडल ओबीसी मतलब हेलो 1 मिनट क्लैरिटी करिए। ओबीसी इज अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब नॉन दलित, नॉन ट्राइबल, जो बाकी हो गए ना, यादव, कोयरी, कुर्मी, इसको बोलते हैं ओबीसी। तो नहीं, हम कह रहे हैं कि क्या मंडल कमीशन में, और या लोहिया का जो बेसिकली जो मंडल कमीशन जो बना 77-78 में जनता पार्टी में, ये तो बेसिकली लोहिया का ही जो स्लोगन था उसी का आधार पर बना बाद में। तो क्या वहां भी था ये मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए इस तरह की बात थी? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ये मुझे जहां तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, और उसमें कहीं पर माइनॉरिटीज की बात नहीं आती है। नहीं है, यही मेरे दिमाग में भी बार बार यही आ रहा था कि जो मंडल कमीशन में भी आपने जो बात उठाई डॉक्टर लोहिया की, तो वो तो संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पाए 100 में 60 की जब बात हो रही थी, तो उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मुस्लिम वर्ग के पिछड़े लोगों को भी लेकर के चल रहे थे। वो मुस्लिम समाज को अलग करके नहीं देख रहे थे, क्योंकि जब जाति की बात होती है, अब जैसे विश्वविद्यालयों में मुस्लिम समाज के जो अंसारी हैं उनको आरक्षण मिलता है, जो भारत सरकार की केंद्र की सूची है। लेकिन अब जब अगर ये सवर्ण आरक्षण की बात है, तो मुस्लिम समाज में सैयद, शेख, अशरफ, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं जिनके लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, अगर ये 10% का दायरा बढ़ेगा तो उसके अंतर्गत सैयद, शेख, अशरफ में भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन एक पूरे विमर्श में डॉक्टर सिंह, इस पर हमें मानना पड़ेगा, जाति व्यवस्था भारत की रियलिटी है, आप उससे अलग नहीं सोच सकते हैं। आप चाहे सिख समाज में ले लें, वहां भी जो तरखान है और नीचे के जो बढ़ई है और जो ऊपर का जाट समुदाय है, वही स्थिति मुस्लिम समाज में भी है, क्रिश्चियन समाज में भी जाति व्यवस्था है। आप जब समाज शास्त्री मेंडलबॉम की बात करें तो देखिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी सीरियन क्रिश्चियंस हैं और दूसरे क्रिश्चियंस हैं। तो पूरे विमर्श में आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि जाति व्यवस्था तो रहेगी, जाति व्यवस्था को तो आधार माना जाएगा, और उस आधार पे अगर आप सवर्णों में आर्थिक रूप से पिछड़ों को दे रहे हैं, तो वो भी जो है एक नया वर्ग बनेगा। जैसे अभी तक अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग था, तो अब सवर्णों में आप देखिएगा कि लोग एक जाति से नहीं जुड़ेंगे, बल्कि सवर्णों में भी वो सारे सवर्ण जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वो अपने आप को एक ब्लॉक के तौर पर मानेंगे और वो एक वोट बैंक का भी काम करेगा। धन्यवाद। वेरी गुड। ये एक चीज मैं शशांक सर से हम धन्यवाद ज्ञापन करें आप लोगों को। शशांक सर से एक
दरख्वास्त है, अगर आपको ये जो चीजें उभर के सामने आई हैं उस पर आप कुछ अपना विशेष टिप्पणी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। डॉक्टर सचान। ये जो अभी तक जितने भी कमीशन बने हुए हैं इस आरक्षण को लेकर के, अगर देखा जाए तो ये अभी तक में कोई ज्यादा ये सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि आज भी समाज का कोई ज्यादा कोई विकास इससे हुआ नहीं है, लोगों को इससे कोई ज्यादा लाभ मिला नहीं है, सिर्फ केवल एक ये बन कर रह गया है। और जो एक सचमुच एक धरातल पे जो दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक विवाद तो दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता है। थैंक यू सर। सब आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार सिंह को, सुशील जी को, देवेंद्र सचान को, और आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, ये मेरे जिम्सी में हम आपको बराबर याद करेंगे, जब भी हम आपको रिक्वेस्ट करें आप थोड़ा अपना कीमती वक्त निकाल करके, बहुत चीजों के बारे में जानकारी मिली, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, इससे एक अच्छा हम चाह रहे हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म बने, और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हम आपको इनवाइट करेंगे। प्लीज हम हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह।